I'm Surbhi Arora. Today we will be taking class 9 economics lesson chapter 1. फ्रेंड्स, मैं सुरभि अरोड़ा। आज हम CBSE की क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का सिलेबस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं एक विलेज क्या होता है। विलेज में क्या क्या तरह की एक्टिविटीज होती हैं। एक्टिविटीज मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉट जस्ट कि और तरह की एक्टिविटीज। सो इन अ विलेज सपोज देयर इज a whole village and they are doing certain transactions or activities। जैसे हम अगर ये बताते हैं ये एक पूरा का पूरा एक विलेज है। इस विलेज को आप कोई भी नाम दे सकते हो। इस विलेज में आपका बुक में लिखा हुआ है पालमपुर, पर हम इसमें कोई भी एक विलेज बना सकते हैं। तो सपोज ये एक विलेज है, इसका नाम हम बी देते हैं। इस विलेज में बहुत सी तरह की एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि इस विलेज में सपोज इतना पोर्शन जो है वो फार्मिंग के लिए यूज होता है। इस विलेज का ऑलमोस्ट आधे से थोड़ा कम पोर्शन फार्मिंग के लिए यूज हो रहा है। कुछ और एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि यहाँ पे डेयरी फार्मिंग होती है, कुछ छोटे छोटे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, कुछ लोग घर पे कुछ आइटम बना के बेच सकते हैं, या डेयरी फार्मिंग हो रही है, या कुछ लोग यहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज कर रहे हैं। सपोज ये शॉपकीपर्स हैं, छोटे शॉपकीपर्स जो इन सबका देखते हैं। थोड़ा सा पोर्शन इस विलेज में जो लोग हैं वो ट्रांसपोर्ट में यूज कर रहे हैं, कुछ बैंकिंग एक्टिविटीज एंड अदर्स पे लगे हुए हैं। तो एक विलेज में सारी एक्टिविटीज हमारी ऑर्गेनाइज होती हैं। अब हम देखते हैं कि एक विलेज में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए। यहाँ पे सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो इस फार्मिंग का है। तो इस फार्मिंग के लिए हमको क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें एक जगह चाहिए जहां पर हम ये फार्मिंग कर पाए, यानी कि हमको एक लैंड चाहिए। ये लैंड पे ही हम फार्मिंग कर सकते हैं। इस लैंड को कल्टीवेट करेंगे, सीड्स डालेंगे, कल्टीवेशन होगा, फिर हार्वेस्ट करके हम अपना वो प्रोड्यूस जो है उसको मार्केट में सेल करेंगे। तो हमको इसके लिए लैंड चाहिए। अब इस लैंड में हमने जब सीड्स उगाई और इसके ऊपर बाकी की चीजें करी, तो कोई तो ऐसा होगा ना जो इसके ऊपर ये सब काम कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं लेबर। तो उस लैंड पे हमको लेबर चाहिए जो ये सारी एक्टिविटीज जो रिक्वायर्ड है फार्मिंग के लिए वो कर सके। और नॉट जस्ट दैट, अब इसको फार्मिंग करनी है तो इसको कुछ चीजें भी चाहिए होंगी इसके अलावा, जैसे कि फिजिकल कैपिटल। इसको चाहिए, जब सीड्स बोते हैं फार्म में तो कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं खोदने के लिए जमीन को, तो वो हमारे इक्विपमेंट्स आते हैं। सीड्स खरीदने के लिए उसको मनी चाहिए, उसको पानी के लिए कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए। तो ये सारी हमारी फिजिकल कैपिटल में आ जाती हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है इस फार्मिंग के, इसको पूरा करने के लिए। तब हम बोलेंगे कि इस फार्म से जो भी कुछ आउटपुट आया है वो हमारा प्रोडक्शन है। सो प्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट्स क्या हुई हमारे लिए, बेसिक लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। अब ये जो प्रोडक्शन है, अगर हम इसका मीनिंग समझें तो इसका मीनिंग क्या है प्रोडक्शन का। हमने कुछ एक रॉ मटेरियल लिया, जैसे कि यहाँ हमारा रॉ मटेरियल क्या हुआ, सीड्स को हमने लैंड में बोया, उसके ऊपर हमने पानी दिया, खाद दिया और लेबर लगाई, खुदाई करी, वो सब करा। उसके बाद उसमें से प्लांट्स उगे और जो फार्म्स उगे उसमें से उसकी प्रोड्यूस हमने बेच दी। तो प्रोडक्शन में हमारा क्या है, हमने इस चीज को एक यूटिलिटी दी। वो जो सीड्स था, सीड्स के अंदर वो एक प्लांट का एस्पेक्ट है। उस सीड को जब हमने उगाया, उस सीड की एज इट इज यूटिलिटी नहीं थी इतनी, बट जब हमने उसको प्लांट के फॉर्म में उगा के बेचा तो उसकी कीमत जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई, यानी कि हमने उस चीज को यूटिलिटी दे दी। सीड्स तो 5-10 रुपए 15 रुपए में खरीदा होगा, बट जब वो बना के, सपोज एक गेहूं का सीड था, गेहूं का सीड्स कम दाम में आया होगा, बट जब वो गेहूं बन के होगा तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो गई। तो यानी हमने उस सीड को एक यूटिलिटी दे दी जिसकी वजह से हम उसे हाई प्राइस पे बेच पाए। सिमिलरली अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के केस में देखें तो यहाँ पर हम कुछ रॉ मटेरियल लेते हैं, उस रॉ मटेरियल में कुछ प्रोसेस करते हैं और फिर फिनिश प्रोडक्ट्स बेच देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं छोटा एग्जाम्पल लेती हूँ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री विलेजेस में होती है। जनरली छोटे छोटे रॉ मटेरियल ले लेते हैं, सपोज नेकलेस बनाना, इयररिंग्स बनाना, तो बीड्स, थ्रेड सब इकट्ठा करके विमेन घर पे जनरली ये सब चीजें बना लेती हैं और उसको फिर मार्केट में सेल कर देती हैं। इंडिविजुअली उन आइटम्स की कॉस्ट जो है
मार्केट में काफी कम होती है, बट कलेक्टिवली जब हम उसे फिनिश प्रोडक्ट के रूप में बेचेंगे तो उसमें एक यूटिलिटी आ जाती है। इस यूटिलिटी से हमारे को एक अच्छा प्राइस मिलता है। तो यूटिलिटी हमारे लिए एक अच्छा प्राइस फेच कर सकती है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस मीन्स गिविंग यूटिलिटी टू द आइटम सो दैट इट फेचेस अ हायर प्राइस इन द मार्केट। Another example that we can take is there are so many trees which are there in the market. If a person just cuts those trees and sells the woods, he will be getting some amount out of that. But now this person converts that piece of wood into a piece of furniture. So the price of the furniture that he gets by using that wood fetches a higher price. Now this person takes this piece of furniture outside his village. From this village, he takes it to the town. Now this piece of furniture will fetch a higher price in the town because the utility usage of furniture is more in the town. So we can say that the farm utility gets created when the wood is converted into a piece of furniture, and when the person takes it to the town, it's a place utility which gets created. Farm utility, place utility, and suppose the person waits for the time period to sell the goods when the demand is higher. Suppose the schools are reopening in the town at a particular point of time. There is a demand for those piece of furniture. So when the person sells it at a particular time period when the demand is higher, we say that a time utility is also getting created in that product. So utility means when we are converting something which will fetch a higher price than the raw material which is going into its production. So I hope you all have understood that production, the requirements for production is land, labor and physical capital. Now there has to be one person who is organizing all these things. Land cannot work on its own, labor cannot work on its own, and physical capital cannot work on its own unless there is a human being or there is some organization which is getting all these things together to do the activity of production. So we say there is a requirement of an entrepreneur, or whom we call it as a skilled labor generally. There is a slight difference between skilled labor and entrepreneur in the sense that entrepreneur bears the risk of this organization. Suppose tomorrow there are floods in this village and everything is wiped out. So the loss is only of the entrepreneur, not of the labor, because labor is only getting his wages for providing his services to this farmland. But the entrepreneur bears the risk of both profit and loss. That is why he is known as an entrepreneur. He is a specialized kind of labor. We say this is a specialized skilled labor who is undertaking these activities for the production purpose. So this is like entrepreneur bears the risk, he does some innovations in the production process, and he brings all these factors in one place, and these are known as also the factors of production. So there are 4 factors of production: land, labor and capital or physical capital, and we have entrepreneurship. Now the returns which each of them gets it, land will fetch a rent. लैंड का प्राइस क्या है? रेंट मिलेगा. लैंडलॉर्ड जो है रेंट का, उसको लैंडलॉर्ड है लैंड का, उसको रेंट मिलेगा एज अ रिवॉर्ड. लेबर को क्या मिलेगा? अपनी वेजेस, जो उसको वेजेस मिल रही है, वो काम करने के लिए पर आवर, पर वीक, पर मंथ जो भी, वो उसको अपनी वेजेस मिलेगी. कैपिटल को क्या मिलता है? इन रिटर्न इंटरेस्ट. सपोज दिस एंटरप्रेन्योर टेक्स मनी फ्रॉम द बैंक or from any person, and on that money he has to pay the interest. Now why this interest is being paid? This interest is paid for 3 reasons basically. One is that the person who is giving the money, the person who is lending the money, he is parting with his liquidity. He is blocking his money for a fixed time period, so he will not be able to spend that money. So when he wants the money back, he will be charging something extra known as interest. Second thing is, when the lenders are giving the money, they also have to maintain the accounts and administration part of it.
So for that they are charging a little extra, which is known as the interest. And third reason is because of the passage of time. When we have taken the money, suppose let's take an example. A takes money from B of rupees 10,000 on 1st January 2020. Now suppose he takes this for 1 year period. So 1 year के बाद में let's suppose 31st December 2020 को he has to repay this 10,000 to him. But in between this 1 year period there is also an inflation. Suppose the inflation rate here is 9% per annum. So that means inflation की वजह से जो 10,000 हमने पहले लिए थे उसकी वैल्यू अब 10,000 ना रह के उसमें से 9% और कम हो जाएगी. So that means now if he is paying 10,000, repaying that 10,000, he is at a loss because the value of 10,000 which was there on 1st of January is not the same on 31st of December. So for that loss this interest is taken. So this interest you need to understand is charged for three things. One is for the time period, another is for the administrative cost, and third is for liquidity, parting with liquidity. So interest is taken by the capitalist. We call the person giving the money as the capitalist, and for parting with liquidity, for administration cost, and for the time period. So interest is given. Now production takes place only when all these factors of production are there, then we can say that production is taking place. And production, as we have now explained, is the utility, or it is fetching a higher price when you are producing certain goods. I hope you are able to understand the lesson. Do share your feedback and comments on our YouTube channel. Friends, I hope आपको ये आज का सेशन समझ में आया होगा. अगर आपके कुछ सजेशंस, फीडबैक, कमेंट्स हैं तो वो हमें दीजिए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि आप और आगे किस तरह के लेसन्स जानना चाहेंगे. थैंक यू. Hello students, we'll continue with our factors of production. Now we'll discuss the characteristics of the different factors of production. हमारे जैसे हमने लास्ट सेशन में करे थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में. लैंड की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम को एग्जांपल दिया था कि ये एक विलेज था, ये विलेज का इतना एरिया है यानी इतना लैंड है, तो ये लैंड जो है हमारा क्या है? फिक्स्ड. सो लैंड की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक इज दैट लैंड इज फिक्स्ड. The whole world, if you see the whole earth, the land is fixed. But the thing that you have to understand here is that you may argue that some of the land is reclaimed from the sea. We have in Mumbai Bandra reclamation area, and there are certain other areas where we have reclaimed the land from the sea. But that kind of land is very, very marginal. Besides, when you are reclaiming land from a part of the sea, there may be other portions of land which may get submerged in the sea. So if you see overall, the total land area may remain more or less the same. So that is why we consider that land is fixed, although it may not exactly be fixed in the real sense. But for economics purpose, we are considering here that land is a fixed factor of production. You cannot change it. This area of this village will remain the same. Borders of the countries will remain the same. So land remains fixed for all economic purposes here. Land ko you cannot take it from one place to another. So land lacks the mobility. In case of money, you can transfer money from one place to another. So the money passes from one hand to another. But in case of land, this remains fixed where it is. So we see that money can be transferred from one place to another, but the land remains fixed. It cannot be taken from one place to another. So land is a fixed factor of production. It lacks mobility. We cannot take land to some other place. Whatever this village has land, it has to crop all of it in this village only. Now we come to the labor.
In this case, we have to consider that labor and his services are separate. एक लेबर अपनी सर्विसेज को बेचने जाता है, अपने आप को नहीं. So we need to understand that labor is selling his services and for that he is getting wages. So labor and his services are considered separate. Labor is not selling himself, he is selling his services for the production purpose. Labor has some mobility. बिहार का लेबर मुंबई में काम कर सकता है, यूपी में काम कर सकता है, कलकत्ता में काम कर सकता है. So we discussed that labor is mobile because people can move from one place to another. They can go for search of work at any other place. So land is not mobile, labor is somewhat mobile. But still some people may not be ready to move out of their homes outside to any other place or city. So that is why we are saying that some labor are mobile. And for this labor they are getting the wages, and labor is less mobile than the capital. Now we moving on to the features of capital. Capital is the money or any equipments or anything which is used for the process of production. So that is capital, which is helping us to increase our wealth. So capital is anything which helps us in increasing our wealth. For example, in the manufacturing unit, you need equipments, you need raw materials for all that things, you need money. So all that comes under the capital which is required for the production process. So today we have discussed the production factors of production, various factors of production and their features. In our next session, we will be discussing elaborately on these things. I hope students you would have understood the session today. Please do share your feedback and comments and also let us know what else you would want to learn. तो स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम इसी को थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे और आप लोग हमें अपने फीडबैक कमेंट्स हमारे चैनल में देते रहिए और आगे और आप क्या क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी हमें बताते रहिए. Hello students, now we will be discussing moving forward. We discussed about land. Land is a fixed factor of production. You cannot change the land. It will remain fixed. You can buy more land, but somebody will sell it. So the total land will remain the same. So we understand that suppose we had taken the example of that village. The village has a fixed area of land. So land is a fixed factor. Then now the question arises that since the land is fixed, can we grow more from the same piece of land? If you've heard of a term known as multiple cropping, in that what happens, like one particular farm area we are using a certain area. Suppose this area is used for farming of say one particular crop. So when the harvest season comes, you take out the crop and the land remains empty at that time. So for that period you can grow something else in the same land. So that is known as multiple cropping. For everything that you are growing, they may not have the same period of harvesting and sowing. So in between, when the harvesting takes place, the sowing of the other crop can also take place at the same time. So what we do here is, from the same piece of land, we do multiple cropping. अभी हम लोग ने पढ़ा कि पहले लैंड फिक्स्ड होता है, तो लैंड टोटल एरिया तो हमारा फिक्स रहेगा. अगर कोई बेचेगा तो कोई दूसरा खरीद रहा है तो एक्चुअल टोटल लैंड विल रिमेन सेम. बट क्या ये पॉसिबल है कि हम एक ही पीस ऑफ लैंड पे और ज्यादा उगा सकें? तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका जो साइकिल होता है सोइंग टू हार्वेस्टिंग का डिफरेंट होता है. तो एक कई क्रॉप्स में 4 महीने में क्रॉप उतर जाती है, तो जब वो क्रॉप उतर जाती है तो उस लैंड फ्री हो गया, तो हम उस जगह पे कुछ दूसरा उगा सकते हैं. तो इस चीज को हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग. तो एक ही पीस ऑफ लैंड से हम लोग यील्ड बढ़ा सकते हैं, मतलब आउटपुट बढ़ा सकते हैं. पहले हमने क्रॉप ए लगाया, क्रॉप ए का 4 महीने के बाद सो करने के बाद 4 महीने में उसको हार्वेस्ट किया,
5th मंथ में हमने दूसरा क्रॉप उगाया, उसको अलग 6 महीने लगे, वो जब तक ग्रो हुआ 6 महीने, उसके बाद उसको उतारा और फिर उसी पीस ऑफ लैंड में हमने तीसरी चीज उगा दी। तो एक लैंड का पीस था जिसके ऊपर हमने मल्टीपल क्रॉपिंग कर दी। उसके बाद आता है कि अब ये जो हमारा लैंड है ये फार्मर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज ये एक पर्सन है एक्स, उसका लैंड है, ये एक लैंड हो गया वाई का, इधर एक लैंड हो गया जेड का, यहाँ एक लैंड एरिया हो गया एम का, इधर एक लैंड एरिया हो गया एन का। तो ये सारे फार्मर्स हैं, अभी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जरूरी नहीं कि सारे के सारे फार्म्स जो हैं, ये लैंड एरिया एक साथ मिले आपको। बीच में जैसे ये विलेज में यहाँ पे कहीं घर होगा, कहीं पे फैक्ट्री हो जाएगी, कहीं पे शॉप्स होंगी, तो ये लैंड एरिया सारा एक साथ नहीं है, ये स्कैटर्ड है। तो ये लैंड किस तरह से फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये हमें देखना होगा। तो इस लैंड के लिए हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि क्या ये हमारा लार्ज एरिया है या हमारा मार्जिनल एरिया है लैंड का। मार्जिनल मतलब छोटा एरिया। तो इन कितने इधर ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास सपोज 1 एकड़ से भी कम का लैंड है। कुछ ऐसे होंगे जिनके पास 1 से लेके 3 एकड़ तक का लैंड होगा, कुछ के पास 3 से लेके 5 एकड़ तक होगा, या कुछ का 5 और मोर एकड़ का लैंड होगा। तो हमने इस पूरे लैंड एरिया में ये चेक करना है कि कितने फार्मर्स के पास कितने कितने एरिया का लैंड है। तो उससे हमें पता लगेगा हाउ दिस लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स। Not everyone in the village will have the same area of the land. So all the farmers will have different areas in that village. Some people may have maybe less than an acre of land. Some may have maybe 1 to 3 acres. Some may have between 3 to 5 acres, or some may have 5 or more acres. So we have to distinguish who are the large farmers and who are the small and marginal farmers. Because in case of large farm, we can produce crops which take more place. In the small fields that the farmers are having, we have to grow small items so that the produce is more. So this helps us to study how the land gets distributed among the various farmers. Then the next point that comes here is, now that land is requiring some sowing activity, maybe later on harvesting. So who will do all that work? So now the question comes, who will provide the labor? So the labor comes from the families of the farmers. They themselves may be providing the labor, or maybe suppose there are some farmers, already there are some shopkeepers who don't have any farms like that. So what they do is they work for the farmers. There may be a big a landlord who will have a large piece of land, but that person doesn't want to work himself, so he will employ the labor. So those farmers who don't have the land, or who have small and marginal pieces of land, they may want to work for this landlord. So that is how the labor comes for the sowing and harvesting and all other agriculture activities. Then we have to understand that when we are sowing or harvesting, or during that duration the crop grows, there are certain things which are required for farming, and one of the main thing is that we need irrigation, and for irrigation we need electricity, and then we also need some equipments for toiling the soil. So all these things are known as the capital which is needed under farming. So you have to see that for irrigation there will be some equipment, for electric fittings there will be some equipment, and these are required for farming. Toiling of the soil, or during the terms of harvesting, when the tractor cuts the crop, you have those rolling machines who cut the crop. So all that is required which is needed under farming. Then the farmers will produce whatever they are producing, they will keep a portion of them of that produce for themselves, and whatever surplus they are having, they will sell those surplus to the markets. So whatever they are keeping with themselves, that is for their own subsistence level. So that they are using it for their own consumption.
and whatever extra they are producing, they sell it in the market at a certain price. And even the government buys the goods from the people. These days, since the farmer agitation is on, you must have been frequently hearing MRP. That's MSP actually. MSP, the minimum support price. So minimum support price is the price at which the government buys the surplus produced from the farmers. So this is a minimum assurance which the government gives to the farmers, that they will buy their produce at a certain price level. So the farmers will, if the price in the market is higher than the MSP, the farmer has the choice to sell it in the market. But if the price in the market is lesser, then they will prefer to sell it at MSP to the government. Now the question arises, why the government needs to buy from these farmers? Government needs to buy all these produce from the farmers to build up its buffer stock. Buffer stock. Buffer stock is the cushions of the stock which the government is keeping to meet the contingencies. For example, some years back there was a scarcity of onions in the market. So in that case, the government to regulate the price in the market, they started selling the goods, those onions from its buffer stock. So government keeps certain goods, commodities, agriculture commodities in its buffer, in its store, to be used at the time when there is a requirement. Sometimes there are droughts, floods. In those cases also, to regulate the price, the government provides those produce to the people. Sometimes it happens that the sellers may unnecessarily hoard the goods. They may not want to sell it to the people just so that the price keeps on rising. So in such a situation, the government knows that there is a kind of a created scarcity in the market. So in that case, they will bring those produce from its buffer stock and sell it to the people. So when this supply comes into the market, it regulates the price. We know that as demand increases, the price also increases. But if we are supplying more in the market, the price will come down because more supply is coming into the market. So this is the reason. So farmers have the choice to either sell it at the MSP, minimum support price, or it may sell it in the free market. Free market mein whatever is the price, the farmers will have a choice to sell to whomever they would want to. I hope you understand this, and if you have any questions or comments or feedback, do write to us, and we'll see you again in the next session.